अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के तौर पर मनाया जाता है। इस पूरे महीने में खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक शऊर बेदारी पैदा की जाती है और इस सिलसिले में हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ बसवातारकम इंडो अमेरिकन कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर की जानिब से आज सुबह अवेयरनेस वॉक का एहतमाम किया गया। इस वॉक में अदाकारा समयुक्ता मेनन और मीनाक्षी चौधरी ने मेहमानी खुसूसी के तौर पर हिस्सा लिया। इसके अलावा JSR प्रसाद ट्रस्ट बोर्ड के रुकन ने भी इस दौड़ में शिरकत की। इस मौके पर नौजवान लड़के और लड़कियों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। अदाकारा ने कहा कि तर्ज जिंदगी में तब्दीली और तनाव की वजह से मुतादद खवातीन ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो रही हैं। इन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से इस मोजी मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। अदाकारा मीनाक्षी चौधरी ने कहा कि हर उम्र की खवातीन इस मर्ज का शिकार हो रही हैं, जो माशरे के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने खवातीन को अपने तर्ज जिंदगी में तब्दीली लाने पर जोर दिया। अदाकारा ने कहा कि शऊर बेदारी प्रोग्राम्स की मदद से इस मर्ज के खात्मे में मदद मिल सकती है। इन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक्किद करने पर इंतजामिया की सताइश की। वाज़ेह है कि छाती का कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो छाती के खलियों में पैदा होती है। నేను మీనాక్షి గారు ఇప్పుడు బాసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో ఉన్నాం. అక్టోబర్ మంత్ ఇస్ ద వరల్డ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ మంత్. ఈరోజు బాసవతారకం హాస్పిటల్లో మనం ఒక వాకథాన్ ఇనాగ్రేషన్ చేసాం. ఇనాగ్రేషన్ అని చెప్పకూడదు, ఇట్స్ వి ఫ్లాగ్డ్ ఆఫ్ ద వాకథాన్. ఎందుకంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది చాలామంది విమెన్ ఫేస్ చేసే ఒక డిసీజ్. బట్ ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీస్తో, ఇప్పుడు ఉన్న medical equipments, so we can cure the breast cancer. And for that, to spread the awareness, WHO has given the motto for this year, which is no one should fight the breast cancer alone. Ee motto thoti we have to, it gives that message that it's the compassion, it's the love that we can give to the cancer patients that will help them to survive the disease. So we are just flagging off the walkathon right now. So we are here today to be a part of a very special cause, which is creating awareness against and about breast cancer. One of the most commonly diagnosed diseases. This is in women, not just in India but worldwide. And I think I'm truly grateful to be a part of such a cause. Endukante, it's like they say, prevention is better than cure, and awareness regarding this. But we're here today for a cause that needs to be celebrated and mostly to be appreciated, because Basavatarakam Indo American Cancer Institute has been doing this for years on now, and I'm just glad to be a small part of this today. So I think the entire team of doctors and the institute deserve a big shout out for this and for having us here to create awareness regarding it.